Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme Educational Implications of Allports' Trait Theory of Personality. As we know that educational implications simply means when we will apply the theory in the field of education in order to make the educational system sound and productive. Dear students, in educational implications, we will see किस तरह से हम ऑलपर्ट के ट्रेट अप्रोच को एजुकेशनल फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, particularly in the field of teaching and learning. In order to make the teaching learning process effective and goal-oriented. There are various educational implications of Allports' trait theory of personality. In today's lecture, we will focus on major educational implications. Number 1, develop positive traits or qualities. With the help of trait approach, teachers can create a program in order to develop positive traits or qualities among the learners. Positive traits or qualities like curiosity, self-discipline, honesty, cleanliness, steady habits, optimism, self-confidence, friendliness, attentiveness, patience, good manners, and participation in various co-curricular activities. यानी कि Allports' trait approach helps the teachers किस तरह से वो डिज़ाइन करेंगे डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स ताकि वो हर एक लर्नर में पॉजिटिव ट्रेट्स या हम कह सकते हैं पॉजिटिव क्वालिटीज डेवलप कर सके लाइक क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी इज वन ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट और क्वालिटी possessed by an individual. ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की that to develop the curiosity among the students. जैसे कि हम सब जानते हैं, it is rightly quoted by someone, we can drag the horse onto the shore but cannot motivate to drink. घोड़े को हम दरिया पे ले सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते हैं, until the horse does not possess the intrinsic motivation. Same is the case with the learner community. Learners तब तक लर्न नहीं कर सकते हैं till they are not intrinsically motivated. That is why motivation is being called the heart of learning. अगर कोई बच्चा आइंस्टाइन जैसा है, I mean to say you, उसमें आइंस्टाइन जैसा ब्रेन है, हाईली कॉग्निटिव डेवलपमेंट possessed by the learner, लेकिन उसकी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है until अगर उस लर्नर में मोटिवेशन नहीं होगी. क्योंकि जो लर्नर्स कैपेबल होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन उनमें इंटरेस्ट नहीं होती है, जिस्ट और जील नहीं होती है, बाय लार्ज मोटिवेशन नहीं होती है, इट मीन्स दे कैन नॉट अचीव द गोल, दे कैन नॉट लर्न. सो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, या हम कह सकते हैं टीचर कम्युनिटी की, टू डेवलप द पॉजिटिव ट्रेट और क्वालिटी लाइक क्यूरियोसिटी among the learners. लर्निंग के लिए बच्चों में क्यूरियोसिटी चेक करनी है, उनकी इन्हांस करनी है क्यूरियोसिटी लेवल.
Apart from it, positive traits like self-discipline and honesty, it should also develop among the learners. As we know that शायद ही कोई और इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, रिलीजन, बाय एंड लार्ज सोसाइटी रोल अदा कर सकती है डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए जितना कि रोल एक स्कूल डेवलप करता है. स्कूल इज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन और स्कूल का पहला लेसन स्टार्ट होता है डिसिप्लिन से. लर्नर बेसिकली डिसिप्लिन सीखता है इंस्टीट्यूशन से. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स लाइक सोसाइटी मेंबर्स, families, especially the school. They have to play important role that to make every learner self-disciplined. क्योंकि without the discipline, system cannot run smoothly. Apart from self-discipline, due importance should be also given to the honesty. ये responsibility है एक टीचर की to make every learner honest. ना तो लर्नर अपने आप के साथ चीट करना चाहिए, ना वो दूसरों के साथ चीट करना चाहिए. दूसरों यानी कि मीन्स फैमिली मेंबर्स, क्लासमेट्स, टीचर्स और अदर सोसाइटी मेंबर्स. अपार्ट फ्रॉम इट, also due emphasis is given on to develop the positive traits or qualities like cleanliness, steady habits, optimism. Cleanliness means how the teachers will develop the sense of hygiene among the students. It is the responsibility of the teacher community to develop the sense of hygiene among the students, especially nursery birds, जिन्हें हम किंडरगार्टन स्टूडेंट्स भी कहते हैं. उनमें कॉन्सेप्ट डेवलप करना, हाउ टू डेवलप और मेंटेन द नेल हाइजीन. नेल हाइजीन को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, यानी कि नाखून काटना या नाखून साफ रखना. हाउ टू मेक डेंटल हाइजीन, किस तरह से अपने दांतों को साफ रखा जा सकता है. ये आदतें बच्चों में डालनी है. अपार्ट फ्रॉम इट, हाउ टू मेंटेन ओवरऑल बॉडीली हाइजीन, किस तरह से आप अपने जिस्म को साफ रखोगे, साफ कपड़े पहनोगे, हर दिन रेगुलरली नहाओगे. सो क्लीनलीनेस इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम. विदाउट द हाइजीन एक लर्नर में कोई चांस नहीं है वो अपने आप को बचा सकता है डिजीज से या एलिमेंट से. साउंड माइंड के लिए जरूरी है साउंड बॉडी, इसीलिए साउंड बॉडी इनकम्प्लीट है विदाउट द हाइजीन. तो हम नक्शल में हम कह सकते हैं टू डेवलप द सेंस ऑफ हाइजीन, इट इज वन ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट और क्वालिटी वी शुड बी डेवलप्ड अमंग द लर्नर्स. टीचर को फोकस करना चाहिए ऑल्सो to develop the good study habits. As we know that there are two types of study habits. एक study habit को हम कहते हैं good study habit, दूसरे study habit को हम कहते हैं bad study habit. Keeping in view the good study habit, एक बच्चा टाइम टेबल के हिसाब से, नॉर्मल प्रोटोकॉल के हिसाब से साल भर पढ़ता है, रेगुलरली पढ़ता है, कंसिस्टेंटी दिखाता है अपनी बिहेवियर में, रूटीन बेस्ड मैनर में पढ़ता है. तो अगर आप उन लर्नर्स को इवैल्यूएट करोगे, वो हाईली नॉलेजेबल बन जाते हैं, उनमें मैक्सिमम चांस होते हैं टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव पोटेंशियल्स एज कंपेयर टू दोज लर्नर्स जिनमें बैड स्टडी हैबिट्स होते हैं. अधिकतर हमारी सोसाइटी में जो लर्नर्स है उनमें बैड स्टडी हैबिट्स पाए जाते हैं. वो एग्जामिनेशन के दौरान
बहुत हार्ड वर्क करते हैं, 15 घंटे 16 घंटे पढ़ते हैं, सिर्फ 1 महीने 2 महीने, नो डाउट वो एग्जाम पास भी करते हैं। ऐसे भी लर्नर्स हैं जो उनमें से डिस्टिंक्शन होल्डर्स बनते हैं, लेकिन एक कमी जरूरी उनमें पाई जाती है, ना तो उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ना क्रिएटिव पोटेंशियल्स उनमें पाए जाते हैं। वो मेमोराइज कंटेंट को करते हैं कम समय में, जिससे सिर्फ वो एग्जाम पास करते हैं या अच्छे मार्क्स लाते हैं। बट दोज स्टूडेंट्स जिन्हें गुड स्टडी हैबिट्स होते हैं, जो साल भर पढ़ते हैं 3-3 4-4 घंटे, ना वो सिर्फ कामयाब बन जाते हैं, बल्कि उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और ओवरऑल कंप्रहेंशन पाया जाता है। So it is the responsibility of the teacher community that to develop the good study habits among the learners. Also optimism. Optimism means hopefulness. अगर बच्चा कभी कभार फेल भी हो जाएगा तो वो डिस्करेज नहीं होना चाहिए, वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना चाहिए। मेरे लिए अब कोई चांस नहीं बनता है आगे चलने का। तो इसीलिए टीचर की जिम्मेदारी है टू डेवलप द पॉजिटिव ट्रेट्स लाइक ऑप्टिमिज्म एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन्हें दिलासा देना है कि हर एक कामयाबी के पीछे फेलियर का हाथ होता है। अगर हमें कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना है, देन वी हैव टू लर्न फ्रॉम द एरर्स, फ्रॉम द फेलियर्स। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रेट अप्रोच वी कैन डेवलप द पॉजिटिव ट्रेट्स or positive qualities among the learners. Friendliness and attentiveness. These are also the positive traits which should be inculcated among the learners. यानी कि बच्चे जो है, they should build the relationships with other classmates or colleagues. Teachers के साथ वो healthy relationships develop करने चाहिए। एक strong bonding होनी चाहिए between the teacher and the student, between the one classmate and another classmate. या बच्चे जो है वो पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप करने चाहिए पेरेंट्स के साथ। विदाउट द पॉजिटिव रिलेशनशिप, आई मीन टू से यू सोशल रिलेशनशिप, देयर इज नो गारंटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन एनी फील्ड। एंड ऑल्सो ड्यू इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू द अटेंटिवनेस। टीचर की जिम्मेदारी है कि जब वो क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाता है, किस तरह से वो बच्चे में अटेंशन डेवलप कर ले। आई मीन टू से यू डिसिप्लिन ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। तीनों डिसिप्लिन जरूरी है बच्चे के लिए, अदरवाइज द टीचर कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल इन हिज हर मिशन। यानी कि बच्चे की कोई गारंटी नहीं है वो अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगा कि नहीं। पेशेंस एंड गुड मैनर्स। बच्चा जो है उसमें टॉलरेंस डेवलप करनी है, गुड मैनर्स डेवलप करने हैं। किस तरह से एक बच्चा दूसरों के साथ नॉर्मली बिहेव करता है, वो रेस्पेक्ट अर्न भी करता है और देता भी है। अगर कभी कभार एक लर्नर दूसरे लर्नर की हेल्प करता है तो एटलीस्ट थैंक यू कहना चाहिए। This is the good manner. And there are other positive traits or qualities which should be inculcated or developed among the students, like participation in co-curricular activities. यानी कि टीचर की जिम्मेदारी है, या हम कह सकते हैं स्कूल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है, that to make the provision of different co-curricular activities, या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज विद इन द जंक्चर ऑफ द स्कूल। एज वी नो दैट द recent policy, which is known as 2020 policy, they have given the concept of 360-degree progress report. 360-degree progress report depicts overall development of the child. I mean to say you physical development, intellectual development, emotional development, social development, by and large spiritual development,
ऑफ द चाइल्ड। तमाम इन डेवलपमेंट्स पे यानी कि फोकस होना चाहिए। तो फिजिकल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है विदाउट द करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इसीलिए बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए डिफरेंट सपोर्ट्स गेम्स में, ताकि उनमें फिजिकल डेवलपमेंट हो जाए, एंड ऑटोमेटिकली फिजिकल डेवलपमेंट विल हेल्प टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बिकॉज साउंड माइंड एग्जिस्ट्स इन द साउंड बॉडी अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल। तो नटशल में हम कह सकते हैं Allports trait approach helps to the teacher how to create a various educational programs in order to develop the positive traits or qualities among the learners. Number second, negative traits or qualities. टीचर को क्रिएट करना चाहिए एजुकेशनल प्रोग्राम in order to eliminate negative qualities or negative traits among the learners. Negative traits or qualities simply means undesirable behavior. As we know that learner में दोनों किस्म के behaviors पाए जाते हैं, desirable behavior and undesirable behavior. Desirable behavior is socially acceptable behavior, while as undesirable behavior is socially unacceptable behavior. Dear students, it is the responsibility of the teacher community कि बच्चों में जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, आई मीन टू से यू नेगेटिव ट्रेट्स है, उन्हें एलिमिनेट किया जाए या उनकी इंटेंसिटी को रिड्यूस किया जाए। फॉर इंस्टेंस, बच्चों में एग्रेशन पाया जाता है। एग्रेशन मीन्स एंगर। एग्रेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मीन्स ऑफ वायलेंट एंड हॉस्टाइल बिहेवियर, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं, एक इंडिविजुअल के लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि जो इंडिविजुअल्स या लर्नर्स एग्रेसिव होते हैं तो उनसे जरूरी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। वो तोड़ फोड़ के मसले में आगे होते हैं, मैन हैंडलिंग के मसले में आगे होते हैं, यानी कि दे आर द वायलेंट इन नेचर। तो इस वायलेंट बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए टीचर हैज टू क्रिएट सच अ टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर। टीचर हैज टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर विच इज फाउंड अमंग द लर्नर्स। अपार्ट फ्रॉम इट डिसऑनेस्टी, बच्चा जो है वो अपने आप को भी चीट कर सकता है, दूसरों को भी चीट कर सकता है, यानी कि पेरेंट से भी चीटिंग करता है, क्लासमेट से भी चीटिंग करता है, टीचर से भी चीटिंग करता है। तो नटशल में हम कह सकते हैं अगर बच्चे में नेगेटिव ट्रेट या क्वालिटी है लाइक ए डिसऑनेस्टी, तो इस डिसऑनेस्टी को एलिमिनेट करना है एंड टू प्रमोट द ऑनेस्टी अमंग द लर्नर्स या इन द लर्नर। इन डिसिप्लिन देयर इज ए चांस कोई लर्नर या अधिकतर लर्नर्स टीन एज में इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं विद इन द जंक्चर ऑफ द स्कूल। टीचर इज बीइंग कॉल्ड द बेस्ट एक्शन रिसर्चर। जब भी वो नोटिस करेगा इनडिसिप्लिन को किसी लर्नर में या लर्नर्स में, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर विद द हेल्प ऑफ एक्शन रिसर्च इनडिसिप्लिन बिहेवियर को एलिमिनेट करना। क्योंकि जो इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं, स्कूल प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं, होम प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं। अधिकतर लर्नर्स में पाई जाती है बुलिंग, वो दूसरे स्टूडेंट को इमोशनली हर्ट करते हैं, साइकोलॉजिकली हर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी है एक टीचर की टू नो द कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन और अकॉर्डिंगली इस इनडिसिप्लिन को एलिमिनेट करना है। देयर आर अदर नेगेटिव ट्रेट्स which are possessed by the learners like pessimism and shyness। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है, बच्चों में पेसिमिज्म पाया जाता है। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है वो इतना पेसिमिस्टिक बनता है, वो कहता है कि अब मैं आगे नहीं चल सकता हूं,
मुझे अब कोई जीने का हक नहीं है क्योंकि मैं लाइफ में फेल हो चुका हूं। इसीलिए आप देखते हो, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, बहुत से टीन एजड एडोलिसेंट्स ने, जिन्होंने मैट्रिक का एग्जाम दिया है, 12th का एग्जाम दिया है, फेल होने के बाद उन्होंने सुसाइड की है क्योंकि उनमें पेसिमिज्म डेवलप हो जाता है, डिस्करेजमेंट हो जाती है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाती है। इसीलिए इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, चाहे फैमिलीज है, सोसाइटी मेंबर्स है, बाय एंड लार्ज टीचर्स है, वो बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप करे, पेसिमिज्म को एलिमिनेट कर ले और ऑप्टिमिज्म डेवलप कर ले, बच्चों को प्रॉपरली गाइडेंस एंड काउंसलिंग दे और उन्हें कहे with the help of different therapeutic measures by arranging the various counseling sessions। जो भी दुनिया में कामयाब शख्स है वो भी पहले फेल हो चुके हैं, क्योंकि हम फेलियर से सीखते हैं, ताकि बच्चे जो है उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज रिड्यूस हो जाएगी। वो सिर्फ ना डार्क साइड पे फोकस करेंगे बल्कि वो ब्राइट साइड पे भी फोकस करेंगे। तो नटशल में हम कह सकते हैं, अगर कोई भी नेगेटिव ट्रेट बच्चों में पाया जाता है तो टीचर की जिम्मेदारी है कि नेगेटिव ट्रेट्स को एलिमिनेट कर ले, लाइक शाइनेस आल्सो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो शाई होते हैं, दे फेल टू टॉक विद द पेरेंट्स, दे फेल टू कम्युनिकेट विद अदर बैचमेट्स और क्लासमेट्स। टीचर की तो बात ही नहीं है, दे आर ऑलवेज मेंटेनिंग द गैप विद द टीचर, वो टीचर के साथ बात नहीं कर पाते हैं। स्पेशली बहुत से लर्नर्स में प्रॉब्लम होती है स्टेज फोबिया की। अगर टीचर उन्हें कोई क्वेश्चन आस्क करेगा, शायद बच्चे को आंसर पता भी होता है लेकिन वो नहीं बता पाता है क्योंकि उसमें शाइनेस है। शाइनेस इज द नेगेटिव ट्रेट, और इस नेगेटिव ट्रेट को एलिमिनेट करना है बाय क्रिएटिंग ए सच ए टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। इस तरीके से करिकुलम को डिजाइन करना है या स्कूल एक्टिविटीज को डिजाइन करना है ताकि आसानी के साथ जो टीचर है वो शाइनेस जैसे ट्रेट को एलिमिनेट कर सकता है। अगर बच्चे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या और नेगेटिव ट्रेट लाइक एन एब्सेंटिज्म, इसे भी एलिमिनेट करना है। इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स, एस्पेशली द पेरेंट्स एंड द टीचर्स, टू नो द कॉजेज ऑफ एब्सेंटिज्म। बच्चे में एब्सेंटिज्म क्यों है, बच्चा मोटिवेटेड क्यों नहीं है स्कूल जाने के लिए, और टीचर की भी जिम्मेदारी है, बच्चा इंटरेस्टेड क्यों नहीं है स्कूल में। वाई द लर्नर इज विक्टिम ऑफ मॉल एडजस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं स्कूल मॉल एडजस्टमेंट। ये होम सिक है, ये प्रेफर नहीं करता है कि स्कूल आना, इसमें पंक्चुअलिटी नहीं है। फर्स्ट नो और आइडेंटिफाई द वेरियस कॉजेस ऑफ एब्सेंटिज्म, और अकॉर्डिंगली बच्चे का बिहेवियर शेप करना है ताकि उसमें एब्सेंटिज्म जैसी प्रॉब्लम जो वो स्कूल से गारेजी रहता है, इसे एलिमिनेट करना है। और बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में पाई जाती है, दैट इज ड्रग एडिक्शन। इन नंबर ऑफ लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड ड्रग एडिक्शन बड़ी प्रॉब्लम है एट ग्लोबल लेवल, फ्रॉम 4th class up to the higher education level. Hardly there are the individuals who are free from the drug addiction. यानी कि बहुत सा साइजेबल पोर्शन जो है लर्नर्स का, एस्पेशली द टीन एजर स्टूडेंट्स जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, 11th और 12th क्लास में पढ़ते हैं, वो ड्रग एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। एंड इट इज वेरी मच आयरनी, 3rd class student and 4th class student, I mean to say you primary level students, they have been indulged in the drug addiction. वो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टेबलेट्स लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, ऑरल ड्रग्स लेते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो समाज है या हम कह सकते हैं सोसाइटी है, ये इसकी लपेट में आ गया है। सो इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, हर एक की जिम्मेदारी है दैट टू एलिमिनेट
द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन। किस तरह से बुरी तरह से एक सोसाइटी जो है वो पिट जाती है बिकॉज ड्रग एडिक्शन, एंड दैट इज व्हाई इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, क्योंकि इट इज राइटली कोटेड बाय समवन, वन swallow डज नॉट मेक द समर। एक परिंदे से बाहर नहीं आ सकता है, बाहर आने के लिए हर एक परिंदे और चरिंदे की इंपॉर्टेंस है। तो अगर इस समाज को सुधारना है और बिग प्रॉब्लम लाइक ड्रग एडिक्शन को एलिमिनेट करना है, तो हर एक इंसान, हर एक फर्द इस सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल है, एंड दे हैव टू बिकम द रोल मॉडल्स। दे हैव टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम लाइक ड्रग एडिक्शन। दैट इज व्हाई focus is given on all stakeholders. It is not the responsibility of only the teacher. Teacher, no doubt, is being called the builder of the nation, builder of the society. It is rightly quoted by Kothari Commission, destiny of India is shaped in her classroom. यानी कि teacher can play an important role in order to shape the country in all respects. लेकिन apart from it, there are other stakeholders, और उनके रोल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक कि ड्रग एडिक्शन का सवाल है, सोसाइटी मेंबर्स, लोकल्स की जिम्मेदारी है, स्पेशली पेरेंट्स की जिम्मेदारी है टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in order to eradicate the problems like drug addiction. Number 3, identification of traits. The use of personality assessment tools such as observation, rating scales, self-reports, interviews, personality inventories, and projective techniques should be used by the teacher. यानी कि ये टीचर की जिम्मेदारी है वो डिफरेंट पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल्स को यूज़ करे, चाहे वो इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज है, रेटिंग स्केल्स है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट्स है। With the help of all these assessment tools and techniques, teachers should identify various traits among the learners. Traits like cardinal traits, central traits, and secondary traits. The due importance should be given to develop the cardinal traits. बच्चों में जो पॉजिटिव कार्डिनल ट्रेट्स पाए जाते हैं, ये टीचर की जिम्मेदारी है पहले उन ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उन कार्डिनल ट्रेट्स को डेवलप करना, एक बच्चे के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई बच्चा जो है उसका पैशन है म्यूजिक, तो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल अथॉरिटीज वो म्यूजिक के लिए प्रोविजंस क्रिएट कर ले, ताकि जिस बच्चे का कार्डिनल ट्रेट है म्यूजिक, वो अपने टैलेंट को, अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को चैनलाइज करेगा म्यूजिक में। किसी लर्नर का पैशन है ड्राइविंग, तो उसे ड्राइविंग के फील्ड में डालना चाहिए। कोई लर्नर ऐसा है जिसका कार्डिनल ट्रेट है सपोर्ट्स में, कोई भी सपोर्ट्स गेम जिसे वो लाइक करता है, जहां पर उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, तो उसके लिए प्रोविजन होना चाहिए गेम्स में, ताकि वो अर्न नेम कर ले या अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को डेवलप कर ले सपोर्ट्स में। इसी तरह से बाकी जो कार्डिनल ट्रेट्स है, लाइक किसी बच्चे का कार्डिनल ट्रेट है बिजनेस में, तो उसे बिजनेसमैन बनाना चाहिए। किसी का है पॉलिटिक्स में, तो उसे पॉलिटिकल लीडर बनाना चाहिए। किसी बच्चे का कार्डिनल ट्रेट है मेडिसिन में, तो उसे मेडिसिन में डालना चाहिए ताकि वो बेस्ट डॉक्टर बन जाए। कोई बच्चा ऐसा है जिसका कार्डिनल ट्रेट है टीचिंग में, सो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटीज दैट टू आइडेंटिफाई द कार्डिनल ट्रेट लाइक द टीचिंग, क्योंकि टीचिंग उसका कार्डिनल ट्रेट है, पैशन है उसका, तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, उसके लिए एवेन्यूज खड़ा करने चाहिए ताकि वो अपने आप को टीचिंग फील्ड में डेवलप कर ले। क्योंकि हर एक कामयाब शख्स के पीछे एक टीचर का हाथ होता है, और जिस बच्चे का कार्डिनल ट्रेट टीचिंग है, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरऑल अथॉरिटीज दैट टू प्रोवाइड ए environment where the person can develop cardinal trait of teaching.
Number fourth, attain maturity and resolve mental health issues. The Allports Ctet approach supports the teacher community in creating an atmosphere that fosters psychological maturity. As per the Allports Ctet approach is concerned, टीचर कम्युनिटी की जिम्मेदारी है टू क्रिएट ए कंजीनियल एटमॉस्फेयर, ताकि हर एक लर्नर में साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी डेवलप हो जाए. साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी मीन्स, आई मीन टू से यू साइकोलॉजिकली मैच्योर्ड पर्सन इज दैट वेरी पर्सन हु इज फुली डेवलप्ड एंड पोजेसेस बैलेंस्ड पर्सनैलिटी मेकअप, जिसमें कॉन्फिडेंस नॉर्मल पाया जाता है, जो बच्चा हाईली इमोशनली स्टेबल है, जिसमें सेल्फ कंट्रोल पाया जाता है. वी कैन से दैट द पर्सन इज साइकोलॉजिकली मैच्योर्ड. तो साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी को डेवलप करने के लिए इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू प्रोवाइड सच ए टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर so that psychological maturity can be developed among the learners. Apart from it, psychological maturity possesses the traits or qualities like patience, determination, decision making, self control, by and large modesty. तो ये qualities एक learner में develop करनी है. Dear students, it is the responsibility of the teacher that to eliminate the psychological problems among the learners. अधिकतर learners victim बन जाते हैं various psychological problems or psychological crises like anxiety, stress, sense of insecurity, phobias, low confidence, so on and so forth. That is why it is the responsibility of the teacher. इस तरह से स्कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए विच विल गिव मिनिमम एंजाइटी टू द लर्नर. यानी कि बच्चा जो है वो ब्रिलियंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन का शिकार स्कूल में नहीं होना चाहिए, एंजाइटी का शिकार नहीं होना चाहिए. अगर बच्चे में एग्जामिनेशन एंजाइटी डेवलप हो जाती है तो ये टीचर की जिम्मेदारी है इस एग्जामिनेशन एंजाइटी को एलिमिनेट करना. अगर बच्चे में स्ट्रेस और डिस्ट्रेस पाया जाता है, it is responsibility of all stakeholders to identify the cause of stress and distress और accordingly stress और distress को किस तरीके से eliminate करना है. अगर बच्चों में sense of insecurity पाई जाती है, मे बी sense of insecurity का यह भी रीज़न हो सकता है, मैं पास नहीं हो जाऊंगा, मैं लाइफ में आगे नहीं चल सकता हूं, तो इस sense of insecurity को eliminate करना है. या बच्चों में फोबियाज पाए जाते हैं, एग्जामिनेशन फोबियाज, स्टेज फोबियाज, जिन्हें हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है. तो इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर कम्युनिटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन साइकोलॉजिकल इश्यूज, या हम कह सकते हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो भी इशू है इसे एलिमिनेट करना. बच्चों में लो कॉन्फिडेंस, लो लेवल ऑफ एस्पिरेशन पाई जाती है, इनको एलिमिनेट करना. गोया कि हम कह सकते हैं यहाँ पर Allports थ्योरी हेल्प्स टू द टीचर how the teacher will develop the psychological maturity and also meet the needs and requirements of the learners. It will also help to the teacher community to eliminate the psychological problems which are pertained by the learner in day-to-day life. Number fifth, attain functional autonomy. As we know that the functional autonomy is the ability of a person to perform independently the various tasks required in a daily life. यानी कि जब एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली किसी टास्क को परफॉर्म करता है इन रूटीन बेस्ड मैनर, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब वो टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर उसके पर्सनैलिटी पे रूल करता है, वो फंक्शनल ऑटोनोमस बन जाता है. That is why it is the responsibility of the teacher to engage the learners in different tasks, different activities, ताकि हर एक लर्नर में functional autonomy develop हो जाए. For instance, to engage the learners in study habits,
एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, स्टडी हैबिट्स में हमें एक टाइम टेबल डिजाइन करना पड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट बच्चा कब पढ़ेगा। फॉर इंस्टेंस मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस सब्जेक्ट, सोशल साइंस सब्जेक्ट, इथिक्स, लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट और एनी अदर सब्जेक्ट्स। अगर बच्चे को हम आदत डालेंगे रेगुलरली, कंसिस्टेंटली टाइम टेबल के हिसाब से चलना, तो ऐसा वक्त आ जाएगा when the learner will repeat same behavior consistently, तो ऑटोमेटिकली इस बिहेवियर को लर्नर थ्रूआउट द लाइफ, थ्रूआउट द कैरियर कंटिन्यू करता है, क्योंकि ये बिहेवियर जो है ये इसकी पर्सनैलिटी पे रूल करता है। अपार्ट फ्रॉम इट, पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर in different curricular and co-curricular activities. It is the responsibility of the teacher to engage the learners in various other co-curricular activities like sports, symposia, dramas, discussions, debates, etc. जब रेगुलरली कंसिस्टेंटली एक टीचर बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएगा डिफरेंट गेम्स में, डिफरेंट सिंपोजियाज में, ड्रामाज और डिस्कशंस में, और वक्त ऐसा आ जाएगा जब ये टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर इसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे रूल करेगा, यानी कि लर्नर का बिहेवियर जो है वो फंक्शनल ऑटोनोमस बन जाएगा। फिर उसे ज़रूरत कहने की नहीं है आप कोई गेम खेलो, वो खुद गेम खेलेगा। फिर उसे ज़रूरत नहीं है आप डिबेट एंड डिस्कशन में हिस्सा लो, वो खुद लेगा, क्योंकि उस बिहेवियर ने उसके पर्सनैलिटी पे रूल किया है। इट मीन्स हिज और हर बिहेवियर बिकम फंक्शनल ऑटोनोमस। So with the help of Allports trait theory of personality, हम एक बच्चे में फंक्शनल ऑटोनॉमी डेवलप कर सकते हैं। जो भी पॉजिटिव ट्रेट्स है, क्वालिटीज है, उन्हें हम डेवलप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, हेल्थी हैबिट्स। हेल्थी हैबिट्स मीन्स डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, गुड रिलेशनशिप्स एंड टाइम मैनेजमेंट। किस तरह से हम लर्नर्स में डाइट का कॉन्सेप्ट, डाइट मीन्स बैलेंस डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बच्चा हेल्थी फूड खाना चाहिए रादर देन टू बिकम द विक्टिम ऑफ ड्रग एडिक्शन। ये आदतें बच्चों में डेवलप करनी है। इस किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत है, सुपरविजन की जरूरत है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत है। एक्सरसाइज, अर्ली इन द मॉर्निंग बच्चे को उठाना है और ग्राउंड में लेना है। ये जिम्मेदारी है स्कूल स्टेक होल्डर्स की, एस्पेशली द फिजिकल टीचर। वो अर्ली इन द मॉर्निंग बच्चों को ग्राउंड में ले और उन्हें डिफरेंट स्पोर्ट्स गेम्स खिलाए एज पर देयर टेस्ट, एज पर देयर इंटरेस्ट, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। प्रॉपर स्लीप का कॉन्सेप्ट बच्चों में डेवलप करना है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। गुड रिलेशनशिप, टाइम मैनेजमेंट, या किस तरह से आप प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, कौन सी एक्टिविटी आप सिस्टमेटिकली फॉलो करोगे, यानी कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहनी चाहिए। Allports trait theory of personality helps to develop the overall personality of the child, यानी कि in order to make the learner successful in the life, we have to apply the theory. I mean to say you trait theory of personality given by the Allport in the teaching learning process, so that holistic development of the learner will take place. This was all about the today's lecture. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.